Assalamu alaikum and good evening, guys. Sorry for starting the class so late. I was talking to someone and it was an important call. Can you see the screen, guys? Am I audible? सलाम वाला को कोई जवाब भी नहीं दे रहा भाई. Hello, अस्सलाम हेलो वालेकुम. सर, वालेकुम सलाम सर। जी. So, what about others? आवाज आ रही है सबको? खदीजा, सिद्दीका. Yes, sir. Okay, fine. So, in the last lecture, we have seen the nucleophilic addition reaction of aldehydes and ketones, and we ended with the reactivity of aldehyde versus the aldehyde and ketone towards nucleophilic addition reaction. I think वैसे कौन कौन से रिएक्शन हम लोगों ने कर लिए हैं. Okay, fine. So I think all the reactions of पांच reaction कर लिए ना हम लोगों ने. हाँ ठीक है. This is on. Now we are going to look at a different set of reactions. Oh my God, last वाले से हम डिस्कस करना भूल गए. अभी आप लोग हैं तो आपसे डिस्कस कर लेते हैं जरा. 27th November and it is what? Wednesday. मंडे को क्लास नहीं हुई थी तो उसके लिए हमको एक ऑल्टरनेटिव डे में किसी दिन क्लास लेनी है. सो गाइस, खदीजा, सिद्दीका एंड यहिया. मरियम थी अभी. मरियम अभी नहीं है लेकिन मरियम वाज हियर ना. मरियम थी ना अभी यहाँ पे. डिड एनीवन ऑफ यू सी? यस सर। मरियम वाज हियर राइट. यस सर। 6. तो हम ना, who will remind me? I have to discuss the timing for extra class. यही आप हमको रिमाइंड कर दीजिएगा एट दी. ओके यहिया. यहिया, हेलो. यस सर। ओके, खदीजा, सिद्दीका, आप में से कोई. ओके, आप हमको रिमाइंड कर दीजिएगा अबाउट टाइम डिस्कशन फॉर एक्स्ट्रा क्लास. Yes, sir. ठीक है, आप में से कोई प्लीज रिमाइंड कर दीजिएगा एट दी एंड, है ना, जब और भी बच्चे आ जाए वहां पे. Miriam has joined. Okay. So in the last lecture we saw the nucleophilic addition reaction. एक chemical properties हो चुकी है. We are going to look at the next chemical property. Please write this with me. The reduction of aldehyde and ketones. Reduction of aldehydes and ketones. Now, we have seen the reduction of aldehyde and ketones in the method of preparation of alcohols. ठीक है. So first is reduction to alcohols. One is reduction to alcohols. So if I have a carbonyl carbon, if I have a carbonyl carbon and I react this with lithium aluminium hydride, or I react this with sodium borohydride, or I react this with H2 in the presence of nickel Pd or Pt. I'm just writing it. Sorry. Then what is going to happen? The two groups of carbon will be as it is, and this carbon will get one hydrogen,
the oxygen will also get one hydrogen. ठीक है, तो बेसिकली कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए. एल्डिहाइड gets reduced to 1 degree alcohol. Ketones get reduced to 2 degree alcohol. ये तो पता ही होगा ना आप लोग को, ये सुनो. Yes, sir. ठीक है, कैन आई मूव ऑन? लिख लिया आप लोगों ने? वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस. सीधा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, है ना? डन यहां तक? रेज योर हैंड Yes, इफ यू sir. डन. वेटिंग फॉर खदीजा एंड सदीका. नहीं, इसमें दो ग्रुप्स, यानी इफ बोथ आर अल्काइल तो दोनों अल्काइल वैसे ही के वैसे ही रह जाएंगे. इफ बोथ ऑफ दीज आर हाइड्रोजन तो दो, बोथ ऑफ दीज विल बी हाइड्रोजन एज इट इज. इफ वन इज अल्काइल वन इज हाइड्रोजन तो एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा. देयर इज नो, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, है ना? तो अल्काइल ग्रुप से वहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा. चलिए मूविंग ऑन. द नेक्स्ट वन, रिडक्शन टू अल्केन्स. Reduction to alkanes में, so basically what we are going to do, we are going from C double bond O to, the two groups will be as it is. ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे. Instead of double bond O you are going to get CH2. ठीक है. Now this can be done in two different ways. One of the reaction it is known as Clemmensen reduction. एक का नाम Clemmensen reduction है और दूसरे का नाम है वुल्फ किश्नर. वुल्फ किश्नर रिडक्शन. ठीक है, तो ए Clemmensen reduction. अच्छा, बाय द वे दोनों ही नेम रिएक्शन है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वन. ठीक है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, वी विल स्टार्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ. नो मैटर वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी. एंड वी ट्रीट दिस विद जिंक Hg, है ना? तो व्हेन द अलॉय ऑफ मरकरीज आर नोन एज अमेलगम, तो ये जिंक का अमेलगम है ना? दैट मीन्स जिंक इज मिक्स्ड विद मरकरी. In the presence of HCl, it is going to give you the two bonds will be as it is, और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, प्लस वाटर इज रिमूव, है ना? इस केस में क्या मिलता है? बाय प्रोडक्ट वाटर मिलता है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई हैव फर्स्ट CH3 and CHO and I react this with zinc Hg in the presence of HCl, we get दो कार्बन एटम का एल्केन मिल जाएगा CH3. ये CHO से हट के क्या बन जाएगा? CH2, है ना? CO नहीं रह के क्या रहेगा? CH2. इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? CH3.
यस और नो? मेक सेंस? हाँ भैया, टेल मी गाइस, डज इट मेक सेंस? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Same reagent. Here we have three carbon atoms. Instead of oxygen, two hydrogen, and we don't show hydrogens in the bond line structure, so this is going to be alkane. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. If I have benzaldehyde, instead of oxygen, then we will be having two. Instead of oxygen, we will be having two hydrogens. तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3. मेक सेंस? Yes. इसमें लिखिएगा, Yes, sir. when aldehydes and ketones are treated with zinc amalgam in the presence of HCl, it forms corresponding alkene. Let me know if you're done. We can move forward. Just waiting for you here. Next. Right, B, Wolff-Kishner reduction. In Wolff-Kishner reduction, we first of all react the carbonyl compound, whether it is aldehyde or ketone. Can you identify what is this? NH2, NH2, क्या बोलते हैं इसको?
याद कीजिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अमोनिया का एक डेरिवेटिव है, क्या बोलते हैं इसको, NH2NH2। लुक एट योर नोट्स एंड टेल मी। हम्म। सिद्दीका, माइक ऑन किया था आपने? किसी को नहीं बता रही यार, पता होना चाहिए ना। हम्म। नाइट्रोजन। हम्म। वेरी गुड सदीका, दिस इज हाइड्रोजीन, और इट इज गोइंग टू मेक हाइड्रोजोन। यहाँ पे जो NH2 is the Z, that means carbon, the two groups will be as it is, double bond, नाइट्रोजन के बाद क्या जुड़ेगा, NH2। now we react this with KOH and we heat it above 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, above 100 डिग्री सेल्सियस यूज करना रहता है ना, दैट इज व्हाई वी डोंट यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट, वी यूज इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, सॉल्वेंट केमिस्ट्री से सवाल नहीं आते आपके इसमें, लेकिन फिर भी एक बार आपके दिमाग में बस डाल दिया हमने, है ना, याद करने की वैसे जरूरत नहीं है होपफुली। CH2 इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा, है ना, फाइन। So this is the reaction basically. So if I have first step में CH3, CH2, CHO. In the first step we have NH2, NH2. In the second step we have KOH and heat. क्या मिलेगा, CH3, CH2, CH3। ठीक है, CH3, CH2, CH3, मतलब जो CHO है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू टू हाइड्रोजन्स। Second, if I have 1, 2, 3, 4 carbon atoms, C double bond O as a ketone, and if I have in the first step by NH2, NH2, hydrazine. Second step में we are going to have KOH, which is going to get heated. तो क्या मिल जाएगा, 4 carbon atoms simply. The double bond O will get converted to H2, and we don't show hydrogen in the bond line structure. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes. Raise your hand once you are done. Sorry, guys. हो गया क्या सबका? Okay, let me understand. Moving on. Next लिखिएगा electrophilic aromatic substitution. By the way, this is not the last one. Generally, electrophilic aromatic substitution is the last reaction we do. But इसको हम पहले कर लेते हैं because it is a small portion. इसके बारे में आपको idea होगा. After this, we have important ones, that is oxidation of aldehyde and ketones and aldol condensation Cannizzaro reactions. वो सारी चीजें हैं, ठीक है? So this is not the last one. के बाद भी चीजें हैं मौजूद. Please write electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. ठीक है? So first of all, the first point is regarding the
nature of aldehyde and ketonic group. तो both aldehyde and ketone, these are minus M group and they are deactivating. ठीक है, इसमें लिखिएगा सबसे पहले aldehydes and ketones are minus M groups and deactivating in nature. इससे होगा क्या? इससे होगा ये, therefore hence they form only meta product and their reactivity is less than benzene. Deactivating है, इस वजह से less than benzene है. यहाँ तक लिख लिया. Then we are going to make the we are going to do the reactions. Just waiting for Yahya. ठीक ठीक. तो रिएक्शंस किस तरह से होंगे? We have CHO, तीन रिएक्शन शो करता है ये, बिकॉज इट इज ऑफ डीएक्टिवेटिंग नेचर ना, इस वजह से बाकी रिएक्शन ये शो नहीं कर पाता है. We're going to write that point also. First one is when it can show chlorination when it reacts with Cl2 in the presence of FeCl3 and it gives benzene ring. जो CHO है वो तो वैसे ही रहेगा CHO, अब यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा. ठीक है. It also gives nitration. So if we have concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. CHO और यहाँ पे NO2. Next is concentrated H2SO4, that is sulfonation. Sulfonation में CHO और यहाँ पे SO3H. ठीक है. अब जरा देखते हैं यहाँ पे नेम्स. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना कि मेटा पोजीशन में NO2, SO3H और Cl आ जाएगा. ये सुनो, इस बात Yes. को हम लोगों ने पहले लिख लिया था राइट. Yes. व्हाट विल बी द नेम? इसका नाम होगा M क्लोरो बेंजल्डिहाइड. This will be M nitrobenzaldehyde. इसको हम लोग लिख सकते हैं M सल्फोबेंजल्डिहाइड, लेकिन बेटर नेम विल बी M फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड.
बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन शो करेगा कौन? एसिटोफिनॉन, है ना। बाय द वे दिस इज बेंजल्डिहाइड। ये सारे रिएक्शन किसके हैं? बेंजल्डिहाइड के। दिस इज बेंजल्डिहाइड। Let me know once you're done. Waiting for Sadika. डन सर। अच्छा, तो आपने हाथ रेज नहीं किया इसमें, सिंपल का नहीं किया। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन इज शोन बाय एसिटोफिनॉन ओनली। हम थोड़ा बस एसिटोफिनॉन को चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। इंस्टेड ऑफ CHO यू विल बी हैविंग C डबल बॉन्ड O एंड देखिए CH3। C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, है ना। एसिटोफिनॉन हो गया, हाँ या ना? मेक सेंस? बोलो भैया। Yes, sir. M क्लोरो एसिटोफिनॉन M नाइट्रो एसिटोफिनॉन, और यहाँ पे M एसिटाइल, बिकॉज दिस इज एसिटाइल ग्रुप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
हो जाए तो बताइए। हो गया क्या सबका? ओ, सदी का हो गया आपका? No से। आराम से लिखिए, नो प्रॉब्लम। डन से। नेक्स्ट, oxidation of aldehydes and ketones. Oxidation of aldehydes and ketones. Number one, first point regarding this is aldehydes easily get oxidized to carboxylic acid, but ketones don't. क्या रीजन है इसका? देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड इज कार्बन विद अ डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, है ना? तो यहाँ पे CH बॉन्ड है, इट इज easier to activate the CH bond and oxidize the CH bond. It is easy to break also. But in ketone, what do we have? In ketone, we have carbon, double bond O, and both the bonds are with carbon atom itself. So it is difficult to break this bond and oxidize. ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज वेरी डिफिकल्ट. That is why aldehyde or ketone में which is going to get oxidized easily, aldehydes are going to get oxidized easily. Next, रिगार्डिंग कीटोन्स, कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज करना पड़े तो फिर कैसे करेंगे ऑक्सीडाइज? ठीक है, तो उसके लिए देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, oxidation of ketones is difficult due to absence of hydrogen on carbonyl carbon. ठीक है, now since it is difficult, therefore ketones are oxidized in drastic condition, या विगरस ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, विगरस ऑक्सीडेशन. कैसे होगा? इफ यू यूज एसिडिफाइड या बेसिक या हॉट या हीट के साथ प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, strong oxidizing agents such as K2Cr2O7, KMnO4, है ना, and HNO3, chromic acid, all of these are what? Strong oxidizing agent. उसके साथ साथ these should be also there, है ना, simple CrO3 से नहीं हो पाएगा, है ना, all of these things should be present. अब रिएक्शन जो होगा वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए. फॉर कीटोन्स, if I have, let us suppose, 4 कार्बन एटम्स का कीटोन है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, एंड इसमें ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है. दैट इज व्हाई दीज रिएक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग समथिंग. दीज रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज एल्डिहाइड और कीटोन, है ना. उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है K2Cr2O7, मान लीजिए हमने डाला K2Cr2O7 एंड वी हैव H प्लस and we have heat. So drastic condition में strong oxidizing agent we have. Now what happens? The carbon carbon bond starts to break. So there are two carbon carbon bonds adjacent to the carbonyl carbon, ये वाला and then this one. तो दोनों से हमारे पास क्या बनेंगे? We are going to get carboxylic acid.
इफ यू लुक एट दिस वन कार्बन एटम, जो ब्लू वाला जो हमने बनाया ना, तो इन द ब्लू वन वी हैव हाउ मेनी कार्बन, ओनली वन कार्बन, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी HCOOH ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस, ब्रेकिंग फ्रॉम, व्हाट आई कैन से, जो ब्लू वाला बॉन्ड है ना वो ब्रेक करेंगे तो HCOH बनेगा. एंड इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक द this red bond, then we are going to form two carbon atoms का, that is going to be CH3COOH. ठीक है. अच्छा, बाय द वे HCOOH के साथ भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये तीन कार्बन एटम का मिलेगा, हाँ या ना? कैन यू सी दैट? Yes. चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ब्लू वाले के सारे प्रोडक्ट बना देते हैं ना. इफ द ब्लू वन हैपेंस, अगर सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक तो HCOH बनेगा, प्लस वी आर गोइंग टू गेट थ्री कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड. इफ द रेड वन इज गोइंग टू ब्रेक, देन ये वाला रेड वन है, ये दिस इज टू कार्बन एटम, दिस इज ऑल्सो टू कार्बन एटम, है ना? So basically we are going to get CH3COH plus CH3COH. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Sir, can Yes. you repeat? Any doubt? Please let me know. Sir, can you repeat? I can repeat that. एक अलग एग्जाम्पल से रिपीट करते हैं मरियम, ठीक है ना? Let me know if you understand this one. Let's suppose I have something like this. Now the carbonyl and simple carbon atom it is going to break. तो एक हमारे पास break किस तरह से हो सकता है? Now if the blue one happens, then we get तीन कार्बन का फ्रैगमेंट एंड दो कार्बन का फ्रैगमेंट. So that is going to give me CH3COH, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एंड तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड. गॉट दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी मरियम. Yes, sir. है ना? एंड इफ आई हैव, लेट अस सपोज हम इसको मिटा देते हैं, है ना? एंड ब्रेकिंग विल टेक प्लेस फ्रॉम हियर आल्सो, ये भी ब्रेक करेगा, है ना? कुछ मॉलिक्यूल, लाइक वी विल बी हैविंग बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? So some of them will have this blue type of breaking, some of them will have this red type of. Red वाला भी अगर होगा, then I will get two carbon atom का fragment, and then here I am going to get three carbon atom का fragment. Make sense? Yes or no? So in this case also we are going to get the same thing, है ना? इधर से आपको COOH तीन कार्बन एटम का, और यहाँ से आपके पास दो कार्बन एटम का, so that is CH3COH. So basically we are going to get two products only, not four, but these products are going to be formed via the blue breaking and the red breaking. ठीक है. यहाँ से वैसे हम लोग को एक बात पता चल रही है, इफ यू सी द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे आपको तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, HCOH तीन कार्बन एटम का, दो कार्बन एटम का. बट इफ आई हैव अ सिमेट्रिकल कीटोन, जैसे ये वाला था, सिर्फ वी आर गोइंग टू गेट ओनली टू प्रोडक्ट्स. कैन यू सी दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी. In the case of symmetrical ketone, I am Yes. getting only two products. Right? You can write if a ketone gives only two products, यानी टू कार्बोक्सिलिक एसिड का देता है ना, टू कार्बोक्सिलिक एसिड after drastic oxidation then that is a symmetrical ketone. ठीक है, ये तो बात होगी किसके बारे में? दिस इज ऑल अबाउट द कीटोन्स ऑक्सीडेशन. बाय द वे दे आर नेवर गोइंग टू आस्क यू दिस रिएक्शन डायरेक्टली, है ना? एक सवाल है जिसमें ये रिएक्शन काम आता है, दैट इज व्हाई आई टीच दिस. अदरवाइज ये एनसीईआरटी वगैरह में इस तरह से मतलब दिया हुआ नहीं, बहुत हल्का दिया हुआ है, पूछेंगे नहीं आप लोग को कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कीटोन, इस तरह के सवाल नहीं आएंगे. लेट मी नो इफ यू आर डन टिल हियर. हो गया? ठीक है.
Now, regarding the aldehydes we have seen that aldehyde can easily oxidized. ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है. So right. Next point, since oxidation of aldehyde is easy, it can be oxidized via milder oxidizing agent such as Ag positive and copper 2 positive. इसको लिखिए, फिर उसके बाद हम कुछ सवाल आपसे करेंगे. That is going to be important. अच्छा, ऑक्सीडाइज होगा. एल्डिहाइड इज गोइंग टू गेट ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली, है ना. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा. Let me know if you have written this point. Simple सा point है that it can be oxidized via milder oxidizing agents such as Ag positive and Cu2 positive. ध्यान से देखिए. ऑल ऑफ यू डन, यस और नो? थोड़ा यस और नो बोल दीजिए प्लीज माइक में. Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. See, so this can be RCHO can be oxidized using milder oxidizing agents also. So if we are going to use Ag positive and copper 2 positive, ठीक है, तो यहां से भी आपके पास क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ वी डू दिस इन अ बेसिक मीडियम, दैट इज बाय वी डोंट गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका लेकिन अनायन मिलता है, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव. दैट डजंट मैटर रियली बिकॉज कुछ भी आप यूज कीजिए वही मिलने वाला है. दिस इज ऑल्सो इज डन इन बेसिक मीडियम, तो आपको यही मिलेगा. एसिडिक मीडियम बाद में कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा. आई होप दिस मेक्स सेंस. यस और नो प्लीज टेल मी. यहां तक तो क्लियर है ना? Yes, Yes. sir. Nothing new, right? Now tell me, if aldehyde is getting oxidized, repeat that with me. If aldehyde is getting oxidized, बोली तो If aldehyde is getting oxidized, If Ag का क्या aldehyde is होगा? getting oxidized, हाँ, तो Ag का क्या हो जाएगा बताइए, बोलो भैया. Ag का क्या होगा फिर? Ag ने इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा ना. एक सेंस, Redu- कैसे नो? हाँ, तो Yes. Ag is Yes. हाँ, Ag is going to get reduced to Ag. Ag पॉजिटिव था, Ag पॉजिटिव से रिड्यूस होकर क्या बन गया? Ag. Ag will be solid and it will be giving you a silver mirror. अगर आप लोगों ने टेस्ट किया है सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ये वही टेस्ट है ना. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉलेंस टेस्ट. टॉलेंस टेस्ट या इसको और क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना. ऐसा मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट. डज दिस मेक सेंस? ये हम लोग डिटेल में लेंगे, लेकिन अंदाजा लग रहा है क्या हो रहा है सर में, Yes, sir. है ना. Yes. In this case, what happens? Copper is also going to get reduced and it gives you cupric, नहीं, cuprous oxide, है ना. So which is going to be red PPT. Here it is in +2 state, here it is in +1 state, and this is known as the filling test. Let me know if you're done.
हो गया सबका? ठीक है, 8 नंबर 1। टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट? आप लोगों ने किया सिल्वर मिरर टेस्ट? स्कूल में हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है? Yes, sir. No, sir. I don't know मेरा sir. अभी नहीं हुआ है? प्लीज राइट व्हेन एल्डिहाइड्स react with silver ammonical nitrate, that is AgNH3 whole twice, और बाहर में रहेगा NO3। दिस इज द reagent, it reduces, जब एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा ना, then what aldehyde is going to do, it reduces Ag positive to Ag solid, and a silver mirror is formed on the wall of test tube। ये तो क्या होता है उसमें ना, क्या रिएजेंट वगैरह है, यूज क्या है इसका? दिस टेस्ट is used for detection of aldehydic group। Second point, it is not given by ketones। उसके बाद both aromatic and aliphatic, both aromatic and aliphatic aldehydes give this test। ठीक है, टॉलरेंस रीजन के बारे में अगर देखा जाए तो टॉलरेंस रीजन को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। टॉलरेंस रीएजेंट, पहला तरीका है AgNO3। ओके फाइन सिद्दीका, बट वेट अ सेकंड सिद्दीका, Yes, sir. टेल मी एट व्हाट टाइम विल यू बी अवेलेबल ऑन सैटरडे और संडे? आई हैव टू टेक अ क्लास ऑन सैटरडे और Um, संडे। Saturday I'll be available at any time, sir. I won't be available on Sunday. सैटरडे यू विल बी अवेलेबल एट एनी टाइम? पक्का एनी टाइम मतलब एनी Yes, टाइम? sir. नहीं, हमको स्लॉट Yes, बताइए। sir. गिव मी अ 3 hour slot इन द Um, इवनिंग या 10 आफ्टरनून। a.m. Yes, okay, I'll type it, sir. इवनिंग में नॉट मॉर्निंग। Saudi time? हाँ सॉरी टाइम, नो प्रॉब्लम, सॉरी टाइम। गिव मी अ स्लॉट ऑफ इवनिंग, नॉट ऑफ 1.5 hour, लाइक Um, 3 4 5 जितने आवर्स का आपको लग रहा है, यू कैन गिव मी अ स्लॉट, फिर हम 4 उसी में p.m. डिस्कस करेंगे। till 4 p.m. till 9 p.m. 4 p.m. से 9 p.m. सऊदी Yes, टाइम, sir. राइट? Yes, sir. ठीक है, चलिए इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो योर क्लास विल बी एट एनी टाइम, है ना, इन इसके बीच में आई विल मैसेज यू द Okay, टाइमिंग। sir. ठीक है, आफ्टर आई डिस्कस विद Okay, अदर sir. स्टूडेंट्स।
If you want to leave, you can leave. Yes, sir. Huh. Thank you. Allah Hafiz. No problem. Allah Hafiz. Tolerance reagent is AgNO3 plus NH4OH. है ना? When this reaction will happen, तो NH3 whole twice और NH3 बाहर चल जाएगा, ठीक है, और पानी निकलता है यहाँ से. You can write it like this, or it could be given as we have shown like this: Ag NH3 whole twice and NO2. बाय द वे, जिन लोगों ने ना ये रिएक्शन किया होगा, तो दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट. AgNO3 और NH4OH को दो दो ऐसे मग्स में रहते हैं, उन दोनों को मिलाया जाता है और उसके बाद फिर ये टॉलरेंस रिएजेंट बनता है ना? या तो ऐसे रहेगा, NO3 रहेगा, NO2 में NO3, और इट कैन बी रिटन लाइक दिस. अच्छा, NH4OH है, तो आई होप यू कैन सी दैट इट इज अ बेसिक मीडियम. AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव यहाँ पे लिखा रहेगा, दैट शोज द बेसिक मीडियम. Raise your hand if you're done. If you guys are done, तो ये पूरा रिएक्शन लिख लीजिए. Done everyone? Yes or no? हो गया सबका, ठीक है. Yes, sir. अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टाइमिंग्स, है ना? तो 4 से 9 PM के